Okay, okay. So Jitesh, start with your first presentation. Jitesh, your voice is very low.
होते हैं हेडफोन्स आवाज कट आ रही है। ना ना मतलब नहीं फर्क पड़ा तो से एसी जो है ना ताला में। So, Dr. Sab, it is particularly that it has been developed for the Indian languages only. So, no doubt we have put the English over here in the drop down, but we have not worked on English. So, it is a language independent architecture in programming. And if we have other languages resources, you can just plug in the language resources over there, and this system is ready for working for other Indian languages as well. So, and if you analyze the very popular plasm detection tools that are available, like Turnitin and Urkund and all, so they do not work for Indian languages. So the results are not right. So first thing is they are not able to extract the text out of the PDF file. So that is the major drawback. And second is they don't have the repository. So we have the put the repository of very old PhD theses that were placed on the shelves since long time. So we have digitized and put into the repository as well. So Jitesh, I think you are done, so that we can move to the next. Yeah. So these are the so so if you can just see at the images, so these are the images of the typewritten thesis. So typewritten theses are not, digitized yet. So one of my PhD student has about to finish the PhD, and she has developed the OCR for Punjabi, in which this text can also be extracted. So approximately 90% accuracy she has achieved. So she is trying to achieve more, and within 2-3 months she will be able to complete it as well. Yeah. So any more queries on this pleasant detection tool? Yeah, yeah. Paraphrased text is also, taken care of that. Even synonyms, if person has replaced the original text with the synonyms, so that we are also taking care of, and they are caught over. Yes, we can. Yeah, yeah, Yitesh. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
So, Dr. Sabha, you have been provided with the username and password as well for this website. So you can just try out whether it is giving results or not. So how much accurate results are giving. So just then we can have another session if we have like. Yeah. Yes, yes. That's the objective, sir. That's our objective. That whatever we have already developed, the people should reuse it and extend the work further rather than making it again. So definitely we'll club into one. So okay. So Kapil, can you come with your project? Pardon, sir. Can you come again? Yes, Kapil. Some background noise is there. Can you please help me out in making that clear? Yes. Yeah. Yes. Everything we have developed, sir. And we have a very big list of named entities. Very big list. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. No issues. No issues. Anytime. Definitely. Yeah. So next will be a really important and that will be related to you. That is multi-word expressions and named entity recognition. So that Dr. Kapil is going to explain it. So Dr. Kapil, uh, yeah, Kapil. I think someone is inside your room who is talking on a mobile phone or they're talking to someone. So can you please help me out so we can have. So Kapil, we do not know the presentation. So can you come directly to the demonstration, please? Uh, Kapil, your presentation is visible to us, but your Kapil, your presentation is visible to us only. Can you show the screen where the demonstration is there? Yeah, it's coming. Yeah, it's okay. It's visible. Now can you can explain. You can explain in your own comfortable language as well. So that's not an issue. All know Punjabi and Hindi as well.
ठीक है, कह देंगे। तो क्या होगा, डरने वाली क्या बात है। कोई बात कोई
Okay, thank you, Kapil. So, Manpreet, can you demonstrate your system, please? Dr. Manpreet, are you there? Your voice is not proper. It's not audible much. कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ just ਜੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜੇ ਫਾਈਨ ਹੋ ਬਈ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੋ ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ so is it just wait so is the screen clear okay so this is the system that has been developed by Dr. Manpreet and this is crawl and extract parallel data. So why we have developed this? What is the objective behind it? This is that the when we were about to develop English to Punjabi machine translation system using neural machine translations approach, so we require a huge corpus, right? And we do not have the huge corpus with us and we thought that we need to have the mechanism in which we can develop the parallel corpus by automatically not by doing manual process then what this system is doing that if you have some comparable corpora comparable corpora means they are not the parallel translations but they have some text in between which have the parallel translations as well so this system is capable of extracting the parallel corpus from the comparable corpora so this is basically the aim of this project in which parallel data is generated from the comparable corpora so the first part is crawler. In crawler, we have it's a simple thing in which if you are providing some web link over here, so it will crawl the text out of that website. So that is also very much required. So because sometimes you need to copy from the website and put into it, and then it will work for that. So sometimes it's not working. So it will extract the text out of the website that you are giving to it, right? Yeah. Would you like to add something? Yeah, please. मैं अब ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ओके ओके ओके
हाँ जी, क्या चल रहा है? ठीक हो? गुड आफ्टरनून। बढ़िया। और सुनाओ। कौन से? आप ना? अच्छा। हाँ, तो आप कह दो ना कि हमने तो कश्मीरी परचेज किया है, मैंने बता दिया तो उसको 2000 में कश्मीरी परचेज किया है रिसर्च पर्पसेस के लिए। नहीं 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 नहीं, तो मैं आप कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है वो। नहीं नहीं, तो आप इतना कह दो कि आप प्लीज विशाल सर से बात कर लीजिए। बस। हाँ, आप बस इतना कह दो कि मुझे इतना ही पता है कि मैंने रिसर्च पर्पसेस के लिए वहां से डेटा लिया है कश्मीरी का। और मुझे वो तो मैंने बताया उनको। हाँ, कोई 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 ठीक है, कोई किसी को कोई बात नहीं करनी जब तक मेरे से आप विशाल सर से बात कर लीजिए। हाँ ठीक है। ओके ओके। हाँ जी बताओ। बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 चलो वो तो अब आपके कब्जे में है, आप देखो उनसे वैसे बात। हाँ जी। वो तो भड़के होंगे क्योंकि हमने उनको निकाल दिया ना बाहर लड़के वालों की तरफ से। क्योंकि मैंने देखो अभी जो मेरे ना हमारे यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं, ठीक है, वो भी केसेस वगैरह काफ़ी हैंडल करते हैं, तो मैंने उनसे बात की। ठीक है। मैंने उनको ये दिखाया, वो कहते हैं जी इट इज़ जस्ट अ कंप्लेंट राइट नाउ। ठीक है। अभी इट इज़ नॉट एफआईआर। ये एफआईआर नहीं है, ये जस्ट उन्होंने कंप्लेंट की है। अब ये जो कंप्लेंट के बारे में जो भी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैम इंक्वायरी करेगी, इसको डीए लीगल को भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल को भेजेगी। और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल ने इसके बारे में जो है वो डिस्कस आपको देना है कि आगे क्या करेंगे। तो अभी एफआईआर तो उसके बाद कोई बात होती है, ये एफआईआर करनी है या कोर्ट में जाना। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ हाँ, परफॉर्म कर राइट। हाँ। हम्म। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 हाँ। नहीं, रिमांड क्यों होगा? नहीं नहीं, क्यों होगा रिमांड? नहीं नहीं, वो बात समझ गया। देखो, जो मुझे पता चला है ना, वो कहते हैं कि ये एफआईआर है ही नहीं। ये बेसिकली इट्स अ जस्ट, नहीं 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 नहीं, वो वैसे लिखी हुई है। इट इज़ अ सिंपल कंप्लेंट टू द महिला पुलिस स्टेशन। और इसकी जो रिपोर्ट है जस्ट इंक्वायर कर रहे हैं वो। इंक्वायरी करके जो इसकी पूरी रिपोर्ट बना के ना, इसने डीए लीगल को भेजनी है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल। और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल ने बेसिकली डिसाइड करना है कि इसको आगे एफआईआर दर्ज होगी इसकी, या फिर इसका कोर्ट में केस चलेगा, या फिर क्या करना है। तो मुझे जो मेरे मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो, वो कह रहे थे कि जो एसएचओ है उसको पहले थोड़े से पैसे एडवांस दे दो, और इससे पता कर लो कि आगे जो डीए लीगल कौन है जिसके पास केस भेजेगी, और उससे भी बात करके उसको पैसे दे दो। हम्म।
हाँ हाँ, वो तो है। नहीं तो रिपोर्ट भी तो इन्होंने भेजनी है ना मैडम ने, कि वो क्या लिख के भेजती है। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है। नहीं तो अब कल तो आप ही साथ में बैठोगे ना इनके? नहीं नहीं, वो तो बैठ गया ना राउंड टेबल पे, जो डिस्कशन होनी है सुलटने वाली। चलो वो तो आप बैठे हो जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर पाओगे। तो आप होगे आपके साथ जो। वो तो फिर थोड़ा सा अंकल जी को कह लो, बात कर लेंगे। चलो कोई नहीं, अंकल जी से बात कर लो, मड़ा सा बंसीधर से बात कर लेंगे। बस कल उनको कहो कि बंसीधर से बैठे इधर। समझ गया समझ गया। हम्म। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं, मैं इधर जीजा को भी जरा फोन कर देता हूँ ना। हम्म। नहीं नहीं, बस ठीक है। अब आप ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। अब हमारी तरफ से तो उन्होंने तो 3 नाम दिए थे ना, 3 नाम देने को कहा है ना मैडम ने तो। हाँ, तो आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उनकी तरफ से तो जैसे शिंकू तो साथ में, साहिल तो बैठेगा। उधर से आप गौरव और दीक्षित जी बैठ जाओगे साथ में बस इनके, क्योंकि। अच्छा अच्छा अच्छा, अंकल अंकल आएंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया हो जाए। बस बस आप लोगों ने कल जो जो भी करना है, मैंने तो आप लोगों पे छोड़ा हुआ है, जैसे आपने कर दिया वो फाइनल है हमारे लिए, बस दैट्स इट। बस बस बस। हाँ, बस बस बस। हाँ चलो, वो तो पता क्या है, जो भी होगा। बट ये हो कि आप बैठे हो तो मुझे निश्चिंत हूँ, इसलिए मेरी कुछ चिंता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। बस कोई नहीं, मैं जीजा जी को भी जरूर से फोन करवाता हूँ, बंसीधर को भी, उनको बाकी अंकल बैठेंगे तो फिर थोड़ा हो ही जाएगा मैनेज, कोई ऐसी बात नहीं। शर्मित रहेगी रहेगी। क्योंकि ये बंसीधर भी मतलब वो बीच में डलने को कर रहा था ना, बार बार मैसेज डाल रहा था हमें। तो हम्म। हाँ तो ठीक है, बता कोई बात नहीं। आप बैठे हो ना, फिर देखो मैं तो आपके, मैंने तो देखो साहिल को पहले दिन कह दिया था। मैंने कहा अब हमने अमित जी और उनके फादर के अकॉर्डिंगली चलना है, 100% जो मर्जी हो जाए बस। मैं कहा मेरे को तीसरे बंदे। बस 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 बस, कोई चक्कर नहीं। बस बस बस, आप बस अपने आप सुलटा लेना यार, जैसे भी कर। आप अपने आप सुलटा लेना यार, जैसे ठीक लगे, है ना। ठीक है जी। ठीक है। इसीलिए मैं कल नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बंसीधर के सामने नहीं आना चाहता, वो मेरे को देख के भड़केगा। ठीक है। बस साहिल होगा और आप लोग होगे, तो मुझे कोई चिंता नहीं है बस। ठीक है ना, मैं बैठा हूँ। वो मतलब वो ने उसने ना पहले दिन मेरे को साहिल ने पता क्या कहा था, कि मैं अमित सर को मामा जी कह लूँ, मैंने कहा बिल्कुल मामा जी कह ले। ठीक है ना। अब समझ लो कि आपका भांजा आपके पास बैठा है, आपने कैसे सुल्टाना है आप जाओ। बस बस ठीक है, बस। मेरे को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है सर, जो आपने फाइनल कर दिया मेरे लिए सत्य वचन है बस, ठीक है जी। ठीक ठीक ठीक। हेलो। हाँ शिंकू, अमित जी का फोन आया ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਸੀਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਸੀਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, इज़ इट क्लियर नाउ? इज़ इट अ गुड सिस्टम? ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਟਸ 2010 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਆਈਲ ਸੇ। ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਪਾਈਏ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਫਰੋਮ ਦ BBC ਡਾਇਰੈक्टली। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਰ, ਸੌਰੀ, ਦੇयर इज सम इशू। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਨੇਜ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੌਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਸਿਸਟਮ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ। So can anybody tell whose system has been left? Yeah, so one system is left, that is sentiment analysis system. I think Mukhtar has not come because he is busy somewhere. So Jitesh, can you tell me what is the website of Mukhtar system? Yeah, 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 please. Even Dr. Joson's student has worked on named entity recognition as well. Dr. Joson, am I right? One of your student has worked on named entity recognition. Okay, okay. Rather, I think paraphrasing also one of your student is working. Yeah, 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 definitely. Yeah, yeah, great.
Speech to text we have not worked yet. I think text to speech it was done, but it was done by the Dr. Lahel and Dr. Parminder from GNE. But I think that was no doubt it was his PhD work as well, but that was the DRDO project as well. So it was not made open. So because there was a condition, it was not made public. But they have developed text to speech. But speech to text is yet to be done. That's wonderful. Okay. 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 Yeah. Most of yeah. So most of the systems are either in PHP or Python. Yeah, that's wonderful. Yeah, that will be really great. Yes, yes, yes. That's a wonderful idea. That's wonderful idea. So Jitesh, are you able to find out? Yeah, Jitesh, you are able to find out the web link? Pardon? Yes, please. Okay, okay. Yes, yes, yes. Okay, okay. Got it, got it. Yeah. So this is a sentiment analysis tool, Doc. So this is sentiment analysis tool. So this is we have worked on code mixed data. So you have tweets in which Hindi and Punjabi, English and Punjabi has been used. So you can pick any tweet. You can pick the tweets from Facebook. You can take the WhatsApp data messages. So if you put that messages over here, so suppose I am saying कि हाल है I'm good. So even Punjabi text can also be there. So if you are clicking on analyzing, so it will do the identification. So key is the Punjabi word, hal is Punjabi word, hai is Punjabi word, and then you have the English words like acronym is there, English and this universal. So here we are also doing the normalization as well. So I'm saying कि बना रखा है. So it will do some normalization if like it's you say too good. So too good. So sometimes it's giving not correct results, but it's okay. So it will do the normalization as well. Then we have this transliteration as well. So here if you have some Punjabi text or English text like so ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ so it should be ਰਹੀਆਂ I have typed wrong. So then we have sentiment analysis. I'll say that ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. Its battery life is not good. So in this way it analyzes the sentence and gives you negative, positive and neutral.
So this is what we have done, like statistics. If show you what are the, so this is the statistics of the system, that we have so many total words, so many unique words, number of Punjabi unsorted words, both words, universal words, sentiment words in neutral dictionary. We have so many. So this is what we do have. So this is the combined system, like it does both the work. So you can see that normalization, key remains key. It's a Punjabi word and transliteration is key. Hal, it is a Punjabi word and transliteration is hal. Hai, it's a Punjabi word and transliteration is hai. Then full stop is a universal, right? Camera, it's a acronym, and transliteration, I don't know why is coming, and is, it has picked this from. Is normalization universal? Not, it's a Changi, so good. So some, I think there is mistake over here. So you can see that ki hal hai camera is not good. So it has taken two, as there are two. There is no full stop, so it has taken neutral, and for Changi it has taken positive. So it means it is picking English words, Punjabi words, and then do the analysis. So this is what they have designed. So I hope this can also be of help somewhere. Yeah, so I think we are done with all the demonstrations within 2 days. Yeah, 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 yes, sir. So even in coming days, we will be presenting you the work on anaphora resolution for Punjabi. Like anaphora resolution, I think you will be aware of that. That Akram and Ajmal were there. He is hungry. So what is he, Akram or Akbal? So we are doing for Punjabi, because this is the first work that we are doing for Punjabi. And another project that we are going to complete is Kashmiri OCR. So that is also first project, that word work we will be completing it. So there is no Kashmiri OCR till date. It is there. It's very old one. It's very accurate one, and this is Professor G.S. Lal who is working on that. So I pattern recognition is not my cup of tea. So I don't know about that much. Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah, Jitesh, if you can tell me which OCR we are using for Hindi and Punjabi digitization of theses, and Jitesh, are you there? I am saying that which OCR we are using for digitizing Hindi and Punjabi thesis and books. Yeah, so no, no issues, no issues. So I'll request Dr. Saab, like yesterday, you have talked about one of your staff member, your researchers, to collaborate with Kamal to improve the system English to Punjabi. So I'll say that if we can assign one to one such kind of collaborations,
so that all are interacting with the respective teams, and they are doing their job and completing the works. So that will be wonderful, right? Because they know their systems they have developed, and if they are collaborated. So here I want to add one more thing. The my purpose was to include each and every person over here was because now they have completed their projects, or they are working in their own institutions, right? So I want to rope in those institutions in MOU as well, because the PhD students who has already completed PhD and they are working in their respective institutions, they get credit also in their institutions. So there is no harm, but they have the uplift over there, right? So that is my objective. Yeah. So whosoever is in the regular job, yeah, yes, that will be wonderful because that will be result oriented. And your Python library is a marvelous idea, marvelous. Yeah, yeah. Hmm. Great. Yeah. Hmm. Hmm. Yeah. And it's my pleasure to inform you that this time I will make my MTech Artificial Intelligence students interact with you someday whenever you have time. Now they are perfect in NumPy, Pandas, and even Python as well. Even they have worked on NLTK library as well. So this time, five students, at least five students, I can tell that they are good in that. Yeah. Oh, that's wonderful because this is the first time I have learned NLTK and explored the full library. And I will share you my YouTube channel as well. My all the recordings are also there for those lectures. No issues. Anytime, sir. We can have some we can FTP sort of thing, having the persons of their expertise from all over India. That's not an issue. Oh. Hmm. Hmm. Yeah, definitely. So I would like to keep your one lecture as dedicatedly for my MTech AI students. So, okay then. Thank you very much. Thank you for sparing 2 days for us. And thank you very much to all of my PhD students and Dr. Ajit, Dr. Josan over here, who has spared a lot of time for these 2 days. And we are hopeful that we'll be having good collaboration in future along with my all my PhD students along with us. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ,
We will learn something from you. Okay, I'll send you the recording. I have done the recording as well. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Okay, goodbye to all of you. Stay healthy. Bye bye.